Hey, hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is your Ramandeep Singh, and today we're going to be learning about this new topic, which is input output. है ना? We are continuing in this Python course, and we will learn about this uh, new this thing input output. ठीक है? So what is this input output? Input output means when we create a program, so we have a certain program, है ना? We give it in some data, it gives us some information, है ना? Now this data has to be read by the program somehow. So how to read that data and how to print that data, we can say, है ना? How to output that data is what we all going to discuss about in this video lecture. तो जो डेटा है हमारा वो हम इनपुट कैसे लेंगे वो बाद में देखते हैं. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू आउटपुट डेटा और हाउ टू प्रिंट डेटा. सो टू प्रिंट डेटा वी यूज दिस प्रिंट फंक्शन. प्रिंट input something, let's say my name. So this function is used to print, ठीक है, print data. Data can be a string, integer, float or character, whatever. ठीक है, we can print data using this print statement in Python. So let's take a jump to the editor and take a quick example of this print function. पहले से लिखो. Let's say I print my name, print Raman. ठीक है, let's print some integer 25. Let's print something like 12 plus 12. Let's print, let's see the results. Name, then the age, then we have this thing, है ना. अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट थिंग विच इज़ क्या कहते हैं इसको. लेट्स प्रिंट नेम, एज and what else, let's say the city I live in. ठीक है, अब these three things I am printing. ठीक है, now we can print multiple types of data or a same type of data using this comma. Like we can separate the first thing, we have name, comma, age, comma, again a string, age, then again a string. ठीक है, we can print multiple objects like this using this print statement. पहली चीज़ समझ नहीं आपको. अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ और तो कुछ नहीं है प्रिंट में. ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे. अब आते हैं इनपुट पे. इनपुट में क्या होता है कि हमारे पास वी हैव टू रीड सम डेटा. Reading some data means let's read something like age or name, whatever. Like read name, then read age, read your location, like this. So how we will do it? We will do it using this input function. We have input function in Python. Input function in Python. It returns a string. So whatever it reads, let's say it reads my name, it will return it as a string which we can store in some variable. Let's call it name. Let's say I use this function to read the age. Let's say it reads the age, है ना, and then I will store it in some variable, let's say age. ठीक है, अब क्या कहते हैं इसको कि in this fashion we can read data using this input function. Let's jump to this code editor to understand it better. Name input. Now this will read name as a string.
अब चला के देखते हैं इस कोड को कि हो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो हेयर वी हैव दिस प्रॉम्प्ट, वी हैव टू गिव some data here. Let's give something like my name. ठीक है, so this name has been read in this variable. How? So this function reads that data, whatever I am writing here on the console, and it returns to this variable as a string. ठीक है, अब प्रिंट करते हैं इसको. कूल है. चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमारे पास इसके बाद क्या है. हम इसमें हमने नेम प्रिंट कर दिया एंड देन लेट्स रीड एज. प्रिंट एज. सो इट्स प्रिंटिंग नेम, देन इट्स प्रिंटिंग एज एज वेल. ठीक है, अब देखो और क्या है यहाँ पे. हाँ, तो अब देखते हैं टाइप क्या है. वट एवर वी आर रीडिंग है ना, डेटा वी आर रीडिंग, उसका टाइप क्या है. इसका टाइप देखते हैं. देखो स्ट्रिंग टाइप का है फर्स्ट वेरिएबल विच इज नेम, सेकेंड इज एज. इट इज़ ऑल्सो ऑफ टाइप स्ट्रिंग. हालांकि एज एक इंटीजर है ना, 25 इज एन इंटीजर, बट इट्स टाइप इज क्या है इसका टाइप. इट्स टाइप इज स्ट्रिंग. वी आर गेटिंग स्ट्रिंग हेयर. तो क्या करना है फिर इसका अपने, वी हैव टू टाइप कास्ट इट टू इंट before we use it as a number. So we cannot use whatever we read using this input function as a specific data type. Like let's say if you say okay, I am reading age here using this age function, and I will simply use this age as an integer, but that's not the case. We have to first convert this age into int, है ना, integer. फिर यूज कर सकते हो आप इसको, है ना, उससे पहले नहीं. Cool. Now you can see that I have converted this age into int data type, and now I can use it as a age. I can perform arithmetic calculations over this age. Okay. Now that is your input function. So what basic information you must have at this point about this input function is input reads the data in a string format. ठीक है, फर्स्ट थिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रीडिंग विद प्रॉम्प्ट. रीडिंग विद प्रॉम्प्ट means let's say I want to read something. Okay, so if do you know, like if I, so what I have written here, this is a comment. So if you do not know about comments are statements which are used to describe the information, or used to give some information about the code which we are writing, है ना. ठीक है, so like here I will be writing the code for reading the input with prompt, and the information is given here using this comment. So comments are the statements which are ignored by the interpreter and are not interpreted, है ना, they will be ignored. So whenever the interpreter sees this hashtag, it will ignore this statement, whatever comes after this hash. Cool है. Now let's read the name with a prompt. I want user to be specific. Okay, enter your name. ठीक है, now the user will enter the name. Let's see. Enter your name. You can see that. Enter your name, है ना. Let's enter. It's printing. Now I can also print this name like this. My name is something like this. Enter your name. My name is Raman. ठीक है. Now let's move to the next thing, that is age. Input, enter age. Print my name is, my age is
वट एवर द एज यू हैव, ठीक है. सो व्हाट इज द एज, व्हाट इज द नेम, एज इज, ठीक है, समझ आ गया. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट द थिंग्स. एनीथिंग एल्स you would like to say? सिंपल है, नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है, एंड दैट्स ऑल. कूल है. So we can read the input using a prompt like this. ठीक है. Anything else would like to say apart from this thing? अच्छा, आप क्या कहोगे, मैं ही कहूँगा. सॉरी. रीडिंग विद प्रॉम्प्ट, एज इनपुट प्रिंट होगी एज, और ठीक है. दैट्स हाउ यू कैन, लेट्स सी हाउ वी कैन रीडिंग मल्टीपल इनपुट्स इन द सेम लाइन. अच्छा, ये वाला इनपुट फंक्शन है तो आपको पता है कि सिंगल लाइन में चीज़ों को अपने ऐड कर सकते हैं ना. एंड वी कैन ऑल्सो टाइप कास्ट दैम लाइक वी एक्सप्लेन देयर. We can also read multiple inputs in the same line. How? Let's say I want to read three variables A, B, C. So how would I read it? A, B, C is equals to input. इतना करने पे क्या होगा कि अगर मैं let's say enter A, B, C. So this will give a prompt to the user. Okay, enter the values of A, B and C. इसको पहले इसको हटा देते हैं. Reading multiple inputs in the same line. Enter A, B, C. 1, 2, 3. ठीक है. Now, what is this error? Too many values to unpack. Expected 3. अच्छा, ठीक है, ठीक है. तो अब मुझे, मैंने रीड तो कर लिया एज अ स्ट्रिंग A, B, C. इट विल रीड इट एज अ स्ट्रिंग, है ना. तो कैसे रीड करेगा ये, जो भी 1, 2, 3 मैंने एंटर किया ना वो ऐसे रीड होगा, 1, 2, 3 ऐसे. अब मेरे को इसे किस फॉर्म में लेके आना है, आई नीड टू ब्रिंग इट टू फॉर्म इंटीजर्स 1, 2, 3, where 1 is assigned to A, 2 is assigned to B, C is assigned to 3 is assigned to C, है ना. हालांकि मैं ऐसे कर सकता हूँ, A के लिए इनपुट ले लूँ, फिर B के लिए ले लूँ, फिर C के लिए ले लूँ, 3 बार इनपुट फंक्शन कॉल कर दूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें चल जाएंगी, है ना. बट वो नहीं करना है मेरे को, ठीक है. आई डोंट वांट टू डू दैट. I want to read A, B, C in a single line. So in order to do that, what I will do, I will use this split function. Which function? Dot split. Split at space. Now 1, 2, 3 will be separated by the space. Enter space, that be specific, separated A, B, C. So that means split कर दो इसको इस space पे. So once, तो इतना करने पे क्या होगा, split हो जाएगा space पे. तो मेरे पास कुछ इस तरह की इनपुट आ जाएगा. आफ्टर दिस स्प्लिट फंक्शन, आफ्टर दिस स्प्लिट थिंग इज, स्प्लिट मेथड वर्क्स ऑन द इनपुट, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, A, B, C ऐसे करके स्प्लिट हो गए तीनों लिटरल्स. बट स्टिल आई वॉन्ट दैम टू बी इंटीजर्स, है ना. आई वॉन्ट दैम टू बी इंटीजर्स. Then I'll have to typecast these three objects into integers. So for that I will use this map function. Space separate integers 1, 2, 3. ठीक है. अब प्रॉपरली रीड हो गया है. प्रिंट करते हैं.
print a comma b comma c, 1 2 3 1 2 3, cool है, as an integers. You can check type of, let's say a, like this, ठीक है, 1 2 3, type is integer. So that's how you can, now you can also typecast them to strings. 1 2 3, now you can see that 1 2 3 are strings. So this is the map method which we use to read this split method which we use to split at whatever delimiter we have, है ना, whatever delimiter we have. Here the delimiter was space, we can have a dash, we can have dollar symbol. You can use this split to split the object at a particular diameter delimiter which is appearing consistently in a specific input. Like here in this case, the space was consistently appearing all through this input, 1 space 2 space 3 space 4 space, like this. So I can split the input at that particular diameter like I did here, delimiter at that particular place. And after we split that, it looks like this, and then I can convert it into string using this map method. Cool है? It automatically assigns a to a, value of b to b, value of a to a, value of c to c. ठीक है? And that's how you read it. Cool है? So let me give you some exercise. So that was the basic, how to read basic input output. So let me give you some exercise questions. Exercise questions. So the first one is read in so the input is this. So read this type of input. इसको रीड करो. प्रिंट read this input and print each in a separate line. That means you have to print name like this, then age, then the city. ठीक है. So this is your input and this is your output. तो ये आपका इनपुट हो गया एंड देन यू हैव दिस आउटपुट विच इज दिस वन. ठीक है, रीड नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा इनपुट है, देन यू हैव आउटपुट. This is the exercise to conclude the session. If you could successfully do this, then congratulations, you have really learned well from this video lecture. And just stay consistent, keep learning. I will see you soon in the next video. Till then, bye bye.